Assalamu alaikum dear students. Today our topic is arithmetic progression, which is generally denoted by AP. That's the arithmetic progression. It is unit number 5 of your textbook. Before arithmetic progression, let me see what is a sequence. Sequence. Dear students, let me write some list of numbers here. 7, 10, 13, 16, 19, so on. These numbers को मैं vertical row में लिखता हूँ 10, 13, 16, 19. Dear students, look here. 10 की जो preceding term है that is 7. 13 की preceding term is 10. 16 की जो preceding term that is 13. 19 की preceding term 16. Look at this 10. ये 10 कैसे आया? Dear students, I have added 3 to the preceding term of 10, that is 7. Preceding term of 10 is 7. I have added 3 to the preceding term of 10, means 7. I get 10. 7 plus 3 is equal to 10. Similarly, 13 की जो preceding term है that is 10, यहाँ भी मैंने वही fixed number add किया to the preceding term of 13, means 10. I get 10 plus 3 that is equal to 13. और 16, simply 16, इसको भी मैं यही fixed number add कर to the preceding term of 16, that is plus 3 to the preceding term of 16, that is 13. I get 16. तो यहाँ भी होगा fixed number मैंने add किया to the preceding term of 19, that is 16. 16 plus 3 19. तो सिंपली यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? 7, 10, 13, 16, 19. नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? तो यहाँ भी मैंने नेक्स्ट टर्म में फिक्स्ड टर्म ऐड करना है, यानी यहाँ क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इस पैटर्न की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ भी सिंपली मैंने 3 ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दिस एग्जिस्टिंग टर्म. इफ दिस एग्जिस्टिंग टर्म, इसकी प्रीसीडिंग टर्म है दैट इज 19, तो आई गेट 19 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 22. तो यहाँ होगी नेक्स्ट टर्म 22. सिंपली नेक्स्ट टर्म भी 10 होगी. तो कैसे? वही फिक्स्ड नंबर, इसको भी ऐड करना टू द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दिस एग्जिस्टिंग टर्म दैट इज 22. 22 प्लस 3 वी गेट 25. देयरफॉर वी गेट 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 सो ऑन. बहुत सारे नंबर्स होंगे. टू बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर दिस फॉर्म्स ए जनरल पैटर्न, फॉर डेफिनेट पैटर्न. एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम. सीक्वेंस में एक नंबर में लिखता हूँ एक पैटर्न 23, वर्टिकल रो में 23, 18 भी लिखूँ, 13, 8 सो ऑन. अब देखो यहाँ इस 18 की जो प्रेसिडिंग टर्म दैट इज 23, 13 की प्रेसिडिंग टर्म 18, 8 की प्रेसिडिंग टर्म दैट इज 13. अब ये 18 कैसे आया? डियर स्टूडेंट्स, 18 की जो प्रीसीडिंग टर्म है इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया इस टाइम. सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ 18 दैट इज 23. 23 माइनस 5 वी गेट 18. तो सिंपली यहाँ मैंने ऐड किया था फिक्स्ड टर्म प्लस 3. यहाँ मैंने टू गेट द नेक्स्ट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न, आई हैव सब्ट्रैक्टेड माइनस 5. आई हैव सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म 13. 13 की जो प्रेसिडिंग टर्म है दैट इज 18. अब 13 कैसे आया? मैंने यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हम 5 करेंगे टू द प्रेसिडिंग टर्म ऑफ 18 दैट इज 18 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 13. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5, सब्ट्रैक्ट 5 टू द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ 8 दैट इज 13, मीन्स 13 माइनस 5 वी गेट 8. तो यहाँ इस पैटर्न की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू द प्रीसीडिंग टर्म दैट इज 8. देयरफॉर वी गेट 8 माइनस 5 वी गेट 3. तो इस पैटर्न का, इस सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 3. तो वो होगा 3. तो 3 के बाद क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ प्रीसीडिंग टर्म दैट इज 3. देयरफॉर 3 माइनस 5 वी गेट -2.
we get minus 2. Therefore 23, 18, 13, 18, 3, minus 2, it follows a definite pattern by subtracting minus 5 to the preceding term of the existing term. एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल में 3 ऐड किया था, नेक्स्ट में minus 5 सब्ट्रैक्ट किया था. तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे 3, 9, 27, 81. डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इस 9 की तरफ, 9 की जो प्रेसिडिंग टर्म है दैट इज 3. ये 9 कैसे आया? आई हैव मल्टीप्लाइड 3 टू द प्रेसिडिंग टर्म ऑफ 9, मीन्स 3 इस प्रेसिडिंग 9 की प्रेसिडिंग टर्म दैट इज 3. देयरफॉर 3 इंटू 3, फिक्सड नंबर 3, 3 3 आर 9. तो 27 कैसे आया? 27 इसको भी मैं इसी फिक्सड नंबर से मल्टीपल करूँगा. यहाँ ऐड किया था +3 से, नेक्स्ट में -5 से सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ मल्टीपल किया बाई 3 से टू द प्रेसिडिंग टर्म. 27 की प्रेसिडिंग टर्म दैट इज 9, 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27. नेक्स्ट 81 कैसे आया? तो यहाँ भी हम मल्टीपल करेंगे 3 टू द प्रेसिडिंग टर्म ऑफ 81 दैट इज 27, 27 इंटू 3 दैट इज 81. तो अगर हम इस पैटर्न का नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टर्म ढूंढनी होगी, वो कैसे आएगी? तो वो कैसे आएगी? यहाँ भी हम मल्टीपल करेंगे इस फिक्सड नंबर से, मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल बाई 3 टू द प्रेसिडिंग टर्म ऑफ दिस एग्जिस्टिंग टर्म दैट इज 81. 81 इंटू 3, 3 1 इज 3, तो हमारे पास आएगी टर्म 3 1 3, 3 8 24. तो इस सीरीज, इस पैटर्न का जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज 243, 3 24. Therefore, these numbers follows a definite pattern by adding a fixed number or subtracting a fixed number or multiplying a fixed number to the preceding term to get the succeed number. This is called the sequence. अब हम देखेंगे what is the definition of sequence. Dear students, definition of sequence. A set of numbers, sequence is a set of numbers, dear students. Sequence, it is a set of numbers. Sequence, it is a set of numbers arranged in a definite pattern according to some rule or rules. Dear students, sequence is a set of numbers. जो हम मैंने एग्जाम्पल, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर, जो मैंने लिखा था नंबर 7, 10, 13, 19, सेट ऑफ नंबर्स. इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, but it follows a definite pattern according to some rule. वहाँ क्या रूल था? फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने 3 ऐड किया टू द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ द एग्जिस्टेंट टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म. इट फॉलोज अ डेफिनेट रूल बाई, इट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न अकॉर्डिंग टू सम रूल. यानी मल्टीपल भी किया था, इंटू 3 से मल्टीपल किया, सब्ट्रैक्शन किया था -5 से. Therefore, it is called the sequence. It is called the sequence. The numbers in a sequence are called terms. Its terms, and are generally denoted by A1, A2, so on, इसकी nth term an, और T1 term first, T2 up to Tn, nth term. Look at these subscriptions, 1, 2, 3. These denote the position of the term. तो नंबर, ये सीरीज लिखा था मैंने 7, 10, 13, 16, 19. It follows a definite pattern by adding 3 to the
10, how I get 10, I added 3 to the preceding term of 10, means 7 plus 3, that is equal 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 3, 16. So these numbers, these numbers, the list of these numbers, इसमें जो ये numbers है, these are called the terms of the series, terms of the, and are denoted by A1, A2, A3, A4, A5, so on, AN तक, or T1, T2, T3, T4, T5 up to Tn. 1, 2, 3, these denote the position of the number. Now the students, what is the arithmetic progression? Dear students, now what is arithmetic progression? Arithmetic progression is actually a sequence of numbers. Let me write some numbers: 2, 4, 6, 8, a list of even numbers, so on, 10, 12, 14, 16 up to infinity. Dear students, look here, 4 minus 2 we get 2, second term minus first term we get 2, third term here A1 means first term is 2, A2 second term is 4, A3 third term 6, A4 that is 8. I subtracted first term from second term. 4 minus 2 we get 2. Now A3 means 6 minus 4 is equal to 2. 8 minus 6 is equal to 2. Next term इसकी 10 होगी, तो we get 10 minus 8 is equal to 2. Dear students, it is a sequence of numbers. Actually, arithmetic progression is a sequence of numbers. अगर आप यहाँ देख लेंगे, it is a difference between two consecutive terms. It is called an arithmetic progression if the difference between two consecutive terms remains constant. अब देखो यहाँ difference between two consecutive terms. इनका difference किया मैंने, यानी second term minus first term, 4 minus 2 we get 2, 6 minus 4 we get 2, 8 minus 6 we get 2. Therefore, when I subtract two consecutive terms, subtraction means minus between two consecutive terms, I always get a constant term. इसकी example, next example, 3, 7, 11, 15, so on 19. अगर हम यहाँ भी देख लेंगे, second term minus first term, 7 minus 3, that is we get 4. अगर हम यहाँ भी subtraction करेंगे, 15 minus 7 we get 4. 15, यहाँ होगी 19. 19 minus 15 we get 4. It is 23. 23 minus 19 we get 4. Therefore, arithmetic progression is a sequence of numbers if the difference of any term with its existing term, with its preceding term is always constant, or we can say that if the difference between two consecutive terms remains constant, this is called the arithmetic progression. If the difference between two consecutive terms, हाँ, अगर हम लिखेंगे multiples of 3, 6, 9, 12, so on, infinite multiples होंगे. अगर हम इनका difference देखेंगे, तो इनका difference 3 होगा. तो इन दो term 3 minus term second, इनका भी difference 3 होगा. Therefore, we get a constant term here. Difference between these two consecutive terms, we get a constant term. यहाँ 15 होगा. 15 minus 12, we get a constant term 3. Therefore, if the difference between two consecutive terms remains constant, this series is called an arithmetic progression. Or simply we can say that arithmetic progression is a sequence of numbers. It is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed term to the preceding term. इसकी भी एग्जांपल देंगे हम. फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ 5, 7, 9, 11, 13, नेक्स्ट टर्म होगी 15. Arithmetic progression. It is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed term, by adding a fixed number. अगर यहाँ देखेंगे हम 7 कैसे हमने obtain किया. इस 7 को मैंने 2 ऐड किया. मैंने यहाँ 2, इसकी जो प्रेसिडिंग टर्म थी इसको मैंने 2 ऐड किया, इसको मैंने 2 ऐड किया टू गेट 7. मीन्स मैंने एक फिक्स्ड नंबर यहाँ भी ऐड किया +2 टू द प्रेसिडिंग टर्म ऑफ 9 वी गेट 7 टू गेट 9. 9 को भी मैंने 2 ऐड किया टू गेट 11. 11 को भी 2 ऐड किया टू गेट 13. 13 को भी ऐड करेंगे 2 टू गेट 15. 15 + 2 17. Therefore, यहाँ it is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. यहाँ मैंने फिक्स्ड नंबर 2 ऐड किया, हर एक नंबर को 2 ऐड किया टू गेट द नेक्स्ट टर्म. एक प्रेसिडिंग नंबर
नंबर, एक प्रेसीडिंग टर्म को एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हाँ, यहाँ 10, 20, 30, 40, अगर हम यहाँ भी देख लेंगे 10 को 10 ऐड किया टू गेट 20, 20 को वही फिक्स्ड नंबर ऐड किया टू गेट 30, 30 को भी ऐड किया वही फिक्स्ड नंबर टू गेट 40। इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पर ईयर इसकी, फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी होगी 20,000, अगर इसका पर ईयर इंक्रीमेंट होगा 500, इसका इंक्रीमेंट होगा 500, नेक्स्ट ईयर इसकी सैलरी होगी 20,000 to 500, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी क्या होगी, अगर 500 इसका इंक्रीमेंट होगा तो वो होगा 30,000। तो इट फॉर्म्स ए सीक्वेंस, 20, इसको मैंने एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया 500 को 20, वी गेट 20,000 to 500, इसको मैंने एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया दैट इज 500 टू गेट 30,000। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होगी 30,000 to 500। इट फॉर्म्स ए सीक्वेंस बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। हाउ टू गेट a next number? I have added a fixed number to the preceding number to get the next number. Therefore, arithmetic progression is a list, or it is an arrangement, it is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding number to get the existing number. This is the fixed number. Dear students, यहाँ ये fixed number क्या था, एक constant number 4 था, यहाँ constant term that is 2, यहाँ constant term यानी 10 ऐड किया था, यहाँ 2 ऐड किया। This fixed term is called the common difference and is denoted by D. It is called the common difference, which is the difference between two consecutive terms. It is called the common difference and is denoted by D. Dear students, ये common difference ये positive भी हो सकता है, ये negative भी हो सकता है, even it can be zero. For example, it is also an arithmetic progression. Dear students, it is also an arithmetic progression. अगर मैं यहाँ लिखूँ एक list of number 3, 3, 3, 3, हर एक 3 को मैंने 0 ऐड किया to get the existing number. Therefore, it is also an arithmetic progression because every term is obtained. Each term is obtained by adding a fixed number. यहाँ मैंने 0, 0 ऐड किया to get the next number. Therefore, it is also an arithmetic progression. यहाँ negative भी हो सकता है. For example, अगर यहाँ 100 है, next number 70, next number 40, next number 10, यहाँ मैंने subtract किया 30 to get the next number. 100 minus 30 we get 70, 70 minus 30 we get 40, 40 minus 30 we get 10, 10 minus 30 we get minus 20. Therefore, it is also an arithmetic progression. It follows a definite pattern. I have subtracted a fixed number to the preceding term to get the existing term. Therefore, it is called the arithmetic progression. When we add a fixed number to the preceding to get the existing, to get the next number, it is called arithmetic progression. ये पॉजिटिव भी हो सकता है उसमें, ये कॉमन डिफरेंस इट कैन बी पॉजिटिव, इवन इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो। इसकी एग्जांपल भी मैंने दिखाई थी। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें नेक्स्ट पढ़ना है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।